Hello everyone, welcome back to another video of Core Java series. तो जो थी आज आम पढ़ा वेरिएबल एंड डेटा टाइप जो मैंने एपर्यंत क्लीयर ना वेरिएबल डेटा टाइप्स रे मेक श्योर कि भल ध्यान रे पढ़ बिकज आम डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल अच्छी गोटे फंडामेंटल बेसिक जिनस जब आम बेसिक जिनस क्लीयर हवानी आ जो आडभांस जावा कि स्प्रिंग पढ़ा से बहुत ही डिफिकल्ट हम तो फोकस कर पढ़िया तो यही वीडियो रे दुईटा पार्ट रहिबो फर्स्ट पार्ट विल अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑल द बेसिक थियोरिटिकली आम बुझा देन ऑन द सेकेंड पार्ट विल डू ऑल द प्रैक्टिकल जहाँ भी आम पढ़ी थियोरी आम प्रैक्टिकल केमती करा सब जिन शिखा तो चल वीडियो को स्टार्ट करवा आओ जानिबा थियोरी बेसिस रे बेसिक टू एडवांस लेवल पर्यंत केमती कौन वेरिएबल क्रिएट करा जाए कौन सब डेटा टाइप्स अच्छी तार डिफॉल्ट वैल्यू एक्सेस लेवल एवरीथिंग विल अंडरस्टैंड चलो वीडियो को स्टार्ट करवा सो इन दैट what we'll discuss what is variable, right? Our first question in my mind or in our mind would be what is variable. Variable is a named memory location which you use to store some data, right? What is variable? Variable is a container which is nothing but named memory location in a computer memory, RAM memory, right? Used to store the data. So you can think it like a box, right? Inside box, whatever the value you are putting it, that box is nothing but a variable, and the data which you are putting, that is basically value. So in example, if you are trying to understand, name is a box. Inside that, what we are storing? Rahul is the value, right? So name is the variable and Rahul is the value. Same like age is variable and 22 is the variable value, right? In Java, how do we represent? This is in general, right? In general, we understood like this. But in Java program, how do we represent? We represent anything that is text, right? We'll represent with string. And anything that is number, there are different data type and number data type. But right now we have taken example of int, right? So number variable, if it is, then we will represent with int or long. There are different other types, we'll discuss later. So right now how we are representing? String, name, then the value, correct? So here string is nothing but data type. We'll understand what is data type, but right now you just try to picturize in your mind. Okay, string also got a data type. Name is the variable. This is the variable value. Right? This is how we will represent in the Java class. We'll see the entire full Java class how we can create it. Same like string. Here we have int. Then age equal 22. Age is the variable name which is named memory location we are saying. This is the value. So here name and age are variables. They store value which can change during the program execution. So this is how we will create variable in the Java class. So how it is, let me remove so that you can clearly see, right? This is how we write or we define our variable like this in our Java class. So why do we need variable? We need to store some value in our Java program that may be for any kind of operation or anything that is required inside the Java class. For that we store the data. To store the data we need variable to hold something, right? So in general example, what you understood? Think like a level box or any box. Inside that box we are putting a product or some data. So that is nothing but variable. Variable is kind of a container where you can put some data, right? That box is nothing but variable, and whatever data or whatever product we are putting inside that box, that is nothing but value. So same like here, name is the box, and the value whatever we are putting inside the name box, that is the Rahul, that is value. Same like age. Here also age is the box.
inside that box we are putting 22. That is the value. So I hope you understood what is variable. Variable is a named memory location which we use to store data through a Java program. So that is where we will use variable. So now let's understand. I have introduced string, int, correct? So let's understand what is data type. Data type defines what kind of data or the value we are storing inside that variable, right? That is what in the definition I have mentioned. A data type defines what kind of value a variable can store. को प्रकार डेटा आम स्टोर कर जावा प्रोग्राम कहबानी राइट हाउ इट विल नो कि टेस्ट डेटा मतलब टेक्स्ट डेटा नंबर डेटा ना डेसिमल डेटा राइट देयर आर मल्टीपल different type of data types are there in Java. We'll understand in this part of video. So example रे जदि हम देखिबा नंबर पाइन जेमिति आगर भी कहली कि हम int यूज करबा जदि डेसिमल वैल्यू then we will use double, right? There are other types also, we'll understand later. For text we'll use string. For true false, right, means yes or no kind of data जदि हम किसी स्टोर करार अछि then we will go for boolean data type. So ताको जदि हम represent करा पाए this is basically Java code, right? कि गोटे जावा प्रोग्राम रे केमती लिखा जाए जदि मते एज स्टोर करार अछि int एज int is nothing but data type कौन सब रही छे, right? Example रे कौन दे int then double then the string then the boolean, correct? So these all are called data types. So how we represent the data inside the Java program? Like this. First the structure will be something like this. First data type, then we will have variable name, then we will have value. So this is the structure of creating a data type or variable. Anytime without data type we can't create variable. So with variable, right, we are combining with data type, and the variable name it can be any name but it should be unique. We'll understand what are the rules, right? So if you have seen here int age, salary, name, is place, so these are unique, it is not duplicate. So that is where whenever we are creating data type or variable, right, variable जेतल क्रिएट करछन्ते हम सब बेले यूनिक ना रखिबा आउ किछि बुझिला बेले ना रखिबा जेमति कि गोटे वेरिएबल को जति देखिला हम int एज जेतल देखिला को माइंड कोन आसीबो हां ओके एज किछि स्टोर करछन्ते स्ट्रिंग नेम जेतल लिखुछन्ते कोन माइंड रे स्ट्राइक करछि कि अच्छा किछि गोटे नेम स्टोर करा जाछि जदि मो स्टूडेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करिया अछि देन आई विल क्रिएट वेरिएबल लाइक स्टूडेंट नेम जदि मते एज स्टोर करिया अछि देन आई विल क्रिएट वेरिएबल लाइक स्टूडेंट एज सो जो थरे कि मते देखि कि म जणा पड़ि जिवो कि अच्छा मो एज स्टूडेंट एज स्टोर करछि कि स्टूडेंट नेम स्टोर करछि, राइट? दैट इज हाउ वी शुड क्रिएट वेरिएबल जेतेबेले क्रिएट करछन्ती गोटे नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करिया दरकार जावा कोडिंग स्टैंडर्ड जावा नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करिया दरकार जो थरे कि जे कोनोसी डेवलपर देखिला जे जीए भी से कोड को देखुछन्ती तांग इजीली बुझा पड़ जिवो कि अच्छा ओके ए वेरिएबल एथे पे क्रिएट करा जायछि तार रीजन होछि या तार यूज केस होछि या सेमिति हम क्रिएट करिया पड़े आमे जदि जस्ट हम क्रिएट कर दबा कि int a equal to 10 string b equal to bash something like जदि we will create तुम बुझिबो कोन
इंट एटा कौन ना 10 स्टोर कर बट 10टा कौन राइट यू गेट कन्फ्यूज सेम लाइक जदि आम स्ट्रिंग स्ट्रिंग मु कौन कर स्ट्रिंग राइट s इक्वल टू नागेश जो स्ट्रिंग s इक्वल टू नागेश मु स्टोर कली जी भी मतलब देखला ये कोड को फास्ट माइंड रे तार कन्फ्यूजन रही नागेश एक्चुअली कौन गोटे मनीषर ना ना कि गोटे सब्जेक्टर ना ना कि गोटे प्रोडक्टर ना जाना दरकार राइट तो से एस जगह मु कौन कर पारि आई कैन गिव एनी नेम राइट स्टूडेंट नेम जिते मु देखी स्टूडेंट नेम ओके नागेश अच्छी गोटे स्टूडेंट ना तो लाइक वाइज जिते आम क्रिएट कर इट इज ऑलवेज रेकमेंडेड कि तुम जहाँ भी वेरिएबल क्रिएट कर दैट शुड हैव सम मीनिंग रहिबा निहाती दरकार जो कि समस्त को बुझा पड़े रूल कौन जान लो कि जिते भी वेरिएबल क्रिएट कर राइट फर्स्ट इट शुड बी यूनिक एंड सेकंड वन इट शुड हैव सम मीनिंग जहाँ भी क्रिएट कर नेमिंग कन्वेंशन आम फॉलो कर जिते भी दीटा वर्ड रो वेरिएबल क्रिएट कर वी शुड क्रिएट एज ए कैमल केस कौन दैट से मु क्रिएट कर एग्जांपल राइट मत वेरिएबल नेम क्रिएट करार अच्छे स्टूडेंट गोटे वर्ड नेम गोटे वर्ड राइट तो मु केमती वेरिएबल नेम क्रिएट करी स्ट्रिंग ए स्मॉल स्टूडेंट एन कैपिटल इक्वल टू नागेश तो ये जो देख गोटे वेरिएबल नेम जब क्रिएट कराची दीटा वर्ड जो मिसी कैमल केस लिखा तो जो वेरिएबल आम लिखुं फर्स्ट लेटर शुड बी लोअर केस और स्मॉल अल्फाबेटिकल कैरेक्टर राइट एस शुड बी स्मॉल और लोअर केस रे स्टार्ट हवा दरकार जो कैपिटल लिखी दौरान दैट शुड जो कैपिटल लिखुं तो आम सब बड़े भाव कैपिटल जो कौन कीवर्ड आम लिखुं कि वेरिएबल क्रिएट कर राइट दैट इज नॉट रेकमेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल आ जो क्रिएट कर सब बड़े इम्प्लाइज कर कि हाँ बोधे यहाँ गोटे क्लास ना बिकज क्लास ना जो आम क्रिएट कर फर्स्ट लेटर विल बी अपर केस राइट बड़ कैरेक्टरटा तो से जिते वेरिएबल क्रिएट करा लोअर केस ही रहा रेकमेंडेड आउ बाध्य भी लोअर केस देखा देर आर डिफरेंट सिनेरियो जो कि अपर केस ही रुहे आग को धीरे धीरे जो आम पढ़ा बुझा पड़ो तो 3टा रूल तुम जान लो 4टा रूल एक्चुअली तो फर्स्ट रहा यूनिक नेम सेकेंड रहा किसी मीनिंग थी दरकार थर्ड रहा जब 2टा वर्ड आम मिसाऊँ दैट शुड बी कैमल केस माने फर्स्ट लेटर रहा तुम स्मॉल देन एनी न्यू वर्ड तुम जब किसी वर्ड आड करमती नेम स्टूडेंट गोटे वर्ड रहा नेम गोटे वर्ड रहा 2टा वर्ड को जो जॉइंट कर सेकेंड वर्ड कि जेकोसी थर्ड वर्ड फोर्थ वर्ड फर्स्ट लेटर रहा कैपिटल सो आपको कह जाए कैमल केस रिप्रेजेंट कर फाइनल रूल रोचे कि इट शुड नॉट स्टार्ट विथ एनी नंबर यू कैन यूज अंडरस्कोर it should not starts with number it can with underscore आम यूज करी परिबा वेरिएबल क्रिएशन रे बट नंबर नहीं किंबा कौन सी अल्फाबेटिकल कैरेक्टर भी आम यूज कर अल्फाबेटिकल लेटर भी आम यूज कर जो वेरिएबल क्रिएट कर फर्स्ट लेटर केबे भी रही आ जब वेरिएबल क्रिएट कर इन बिटवीन
वेरिएबल ना भीतर आम लिखि पारे बट फर्स्ट लेटर केबे भी अंडरस्कोर रहिबा माने रही पारे अंडरस्कोर बट अदर देन अंडरस्कोर वी कांट यूज एनी एट द रेट और any other special character we can't use. That is the fourth rule. So now we understood what is variable, what is data type. So again, like in our mind, one more question again it comes, like why do we need variables, data types? It's a very good question because that should come into your mind, right? We need because we have to store data, we have to process data. Whenever we create some class, आम कौन पे एक्चुअल क्रिएट करबे आमे किछि ऑपरेशन करियर अछि किछि इंस्ट्रक्शन देवार अछि राइट कंप्यूटर रे किछि गोटे ऑपरेशन आमे परफॉर्म करियर अछि हम कंप्यूटर सेथि पई आमे जावा प्रोग्राम यूज करबा तो जावा प्रोग्राम जदी यूज करछंती किछि डेटा हमको प्रोसेस करियर थिबो किछि स्टोर करियर थिबो देन जाय आमे डेटा टाइप वेरिएबल थ्रो रे आमे करि परबा विदाउट दैट वी कांट डू दैट टू कंट्रोल मेमोरी यूजेज टू अवॉइड एरर्स. These are the reason we use variable and data type. Real time example रे जदि देखिबा हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जोटा कि स्टूडेंट डिटेल्स राइट we have seen it. नेम हम यूज कले एज यूज कले मार्क्स यूज कले राइट फोन नंबर भी यूज कर परबा राइट एई सब डेटा जदि मते स्टोर करियार अछि इनसाइड जावा प्रोग्राम inside Java program jodi kariar achi then we need variable data types. So without variable we can't store, right? With the data type we can Java cannot understand what type of data we are going to store inside that Java class. So that is where we need variable and data types. And next, how to use in our Java program. तो रियल टाइम गोटे एग्जांपल जदि हम देखिबा जेमिति कहली मो स्टूडेंट डिटेल राइट स्टूडेंट डिटेल रे जदि एग्जांपल देखिबा क्लास स्टूडेंट डिटेल्स हम स्टार्ट हला देन पब्लिक स्टडी वर्ड मेन राइट देन स्ट्रिंग नेम हम कोन स्टोर करले राहुल एज होची 22 फ्लोट मार्क राइट डेसिमल नंबर जदि रिप्रेजेंट करार अछि फ्लोट किबा डबल यूज कर परबा आउ इज प्लेस्ड फॉल्स स्टोर कले देन एई सब डेटा जा स्टोर कले तक प्रिंट करार अछि जेमति हम हेलो वर्ल्ड रे हम प्रिंट करथिले राइट हेलो वर्ल्ड रे केमति प्रिंट करथिले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन राइट लिखिले कि हेलो वर्ल्ड आउ प्रिंट करथिले सेम लाइक हेलो वर्ल्ड जहाँ भी हम डेटा वेरिएबल स्टोर करचंदी करेक्ट वेरिएबल स्टोर करचंदी ताको हम एमते रीड कर परबा नेम जते बळे प्रिंट करबो देन प्रिंट करबो राहुल एटे प्रिंट करबो राहुल एटे प्रिंट करबो 22 एटे प्रिंट करबो राइट 85.5 देन एटे प्रिंट करबो false and the print karbo. So this is how the Java program looks like, right? एवला किछि real time Java program looks like. तो हम public static void main भीतर variable declare define करचंती right with name age mark and age place. तो ये access करते accessing variable data. So this is exactly how real time application stores the data. So kete प्रकार data type अछि there are two types of data type order rela primitive data type and reference data type. प्रिमिटिव डेटा टाइप रे भी बहुत सारा डेटा टाइप अछि जदि हम प्रिमिटिव डेटा टाइप देखिबा राइट प्रिमिटिव डेटा टाइप रे टू टाइप्स ऑफ अछि
गोटे रहा न्यूमेरिक आ गोटे रहा नॉन न्यूमेरिक न्यूमेरिक रे कौन सब रहा न्यूमेरिक भी दी प्रकार अच्छी राइट गोटे हूँ फ्लोटिंग नंबर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जोटा कि डेसिमल कहवा आ गोटे रहा नंबर नॉन न्यूमेरिक कौन रहा बुलियन जोटा कि येस नो स्टोर करार अच्छी राइट आ गोटे रहा क्यार जोटा अल्फाबेटिक डेटा हमको स्टोर करार अच्छी लाइक ए बी सी डी अल्फाबेट स्टोर करार अच्छी तो ये सब रहा प्रिमिटिव डेटा टाइप रे राइट फ्लोटिंग पॉइंट रे जो हम फ्लोटिंग पॉइंट देखिए let me clear this so that we will write it floating point कौन सब रहा floating रहा float and double नंबर कौन रहा नंबर रहा हमारा बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग रहा नंबर टाइप राइट डेटा टाइप देन फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल डेटा जदि जो आम स्टोर कर तो सही टाइम यूज कर एदर फ्लोट कि डबल आ नंबर टाइप जमी कि इंट एज 22 स्टोर कले राइट नंबर टाइप रे हम यूज कर पारे बाइट कि शॉर्ट कि इंट कि लॉन्ग नॉन न्यूमेरिक बुलियन राइट येस और नो स्टोर करार अछि येस और नो दैट इज नथिंग बट ट्रू और फॉल्स राइट ट्रू और फॉल्स एक्चुअल वैल्यू क्यार रे ए बी सी माने सिंगल कैरेक्टर जदि स्टोर करार अछि सिंगल लेटर जदि स्टोर करार अछि हम जावा प्रोग्राम रे then we will go for char type of data. Now this is primitive data type. So let's understand now a reference data type, right? A reference data type. Reference data type. Reference data type रे first रहा class then interface then enum then one more role array. There are 4 type of reference data type, but in primitive data type there are so many. In primitive data again divided into 2 data type, numeric and non-numeric. In non-numeric we have boolean and character. In numeric we have floating point as well as number. So in floating point we have float then double, and in number type byte short int long we have. So we will discuss कि केते बड़ा हमको float यूज करार अछि double यूज करार अछि जेहेतु मल्टीपल अछि राइट वी शुड नो फॉर नंबर टाइप केते बड़ा हम byte यूज करार अछि केते बड़ा short यूज करार केते बड़ा int यूज करार अछि केते बड़ा long यूज करार अछि तो सेटा आम निहाती जाना दरकार बिकॉज मल्टीपल टाइप से डेफिनेटली देयर आर सम यूज केस राइट जो थे कि आम डिसाइड कर पारबा हम कौन यूज करार अछि नाउ लेट्स सी राइट व्हाट आर द डेटा टाइप तार साइज कौन राइट मेमोरी रो तार एक्चुअल कौन साइज आम देखिथिबा जेतेबेले गोटे किछि जिंस किछि वीडियो किंबा म्यूजिक किछि भी जदि हम जेतेबेले गोटे फाइल भी डाउनलोड करछन सेटा हम देखुतबा केबी राइट एमबी जीबी राइट how that is calculated based on this data right data type byte roila short roila int roila right long float double character char boolean so byte type रो जेते वेरिएबल क्रिएट करछंती तार डेटा माने तार साइज केते रहबो 1 बाइट short जेते डेटा माने वेरिएबल क्रिएट करछंती डेटा स्टोर करछंती दैट वुड बी byte 2 byte int will be 4 bytes right long 8 bytes
float 4 bytes, double 8 bytes, character 2 bytes, then boolean depends upon the JVM, right? JVM dependent रोची तो हम केते बड़ कोडा यूज करबा एठी तुम रेंज देख पारतो रेंज ओनली डिसाइड कि बेस्ड ऑन रेंज तुम डिसाइड कर परबो कि तुमको को डेटा टाइप यूज करबार अछि, राइट? तुमडे सेम रेंज रो दरकार देन आई मीन तुम किछि से रेंज भीतर जब किछि डेटा स्टोर करबार अछि देन वी यूजुअली वी यूज इंट शॉर्ट एंड बाइट जेतु रेंज टिके बहुत कम रेंज तो हम शॉर्ट एंड बाइट बहुत कम यूज करूँ बट इन जावा एप्लिकेशन जिते बड़े भी आम किसी नंबर टाइप डेटा स्टोर करूँ फर्स्ट कम्स इनटू माइंड इज इंट देन सेकेंड लॉन्ग जो लॉन्ग के यूज करवा जो बड़ बड़ नंबर थाए जमीक कि अकाउंट नंबर होगा आधार नंबर होगा, राइट? इन दैट टाइप वी बेसिकली यूज लॉन्ग फ्लोट डबल सेम लाइक इंट एंड लॉन्ग, राइट? फ्लोट एंड डबल भीतर भी सही भाया अच्छे, राइट? डेसिमल, राइट? देन दिस जिते आम कि माने छोट नंबर हो डेसिमल नंबर होता देन दैट टाइम वी विल यूज फ्लोट डबल टाइम रे जिते आम इमेजिन कर पारे केते बड़ हो देन इन दैट टाइम वी विल गो फॉर डबल आम डिफॉल्ट वैल्यू सब देखि पारिबा, राइट? डिफॉल्ट वैल्यू जिते डिफॉल्ट वैल्यू केते काम आसो जो इंट एज किसी डेटा एसाइन करवानी इंट एज 10 जो लिखुच 10 एक्चुअली तार वैल्यू स्टोर हो जाउछि बट जो किसी डेटा एसाइन करवानी से एज को जो एक्सेस करवा पब्लिक स्टैटिक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जो प्रिंट करवा, राइट? फर्स्ट सिनारियो रे ये हमको 0 आसो बिकॉज डिफॉल्ट द 0 वैल्यू डिफॉल्ट होची माने इंट रो डिफॉल्ट वैल्यू होची 0 तो जब हम किसी डेटा स्टोर करवा देन जो एक्सेस करवा हमको 10 आसो यार 10 आसो बट जो हम किसी वैल्यू हम स्टोर करना देन इन दैट केस विल गेट डिफॉल्ट वैल्यू इज 0 तो सब जगह डिफॉल्ट वैल्यू अच्छी बाइट रो अच्छी शॉर्ट रो डिफॉल्ट लॉन्ग रो 0L, राइट? फ्लोट रो 0.0F देन डबल रो so whenever there is a floating point number, right, if you can imagine that number जो तुम जापर कि अप टू ए नंबर पर्यंत फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डेसिमल नंबरटा जीव देन इन दैट केस तुम यूज कर फ्लोट बट जो तुम जान कि डबल गोटे फ्लोटिंग पॉइंट अच्छी बट तुम जान अप टू केते पर्यंत जीव तार लिमिटेशन जदि जान देन इन दैट केस यू कैन गो फॉर डबल जो द्वारा कि आम जो प्रोग्राम देखुं, राइट? गोटे वर्ष 2 वर्ष प्रोग्राम देखुना, करेक्ट? तो इन फ्यूचर जमी आमको कौन से डेटा टाइप चेंज करने को न पड़े अननेसेसरीली सेटा को माइंड रखिकी आमको गोटे वेरिएबल क्रिएट करा पड़ो जो थी आम फ्यूचर के डेटा टाइप चेंज करार ना, राइट? वंस तुम डेटा टाइप चेंज कर, राइट? देयर मे बी सम पार्ट ऑफ द एप्लिकेशन जोटा कि फेल हो जाए जीव बिकॉज मल्टीपल जो माइक्रो सर्विस रे काम कर मल्टीपल टाइप ऑफ एप्लिकेशन जो थी कि सब डेटा यूज होता है जो गोटे टाइप रे गोटे सर्विस रे जो चेंज कर तो मल्टीपल सर्विस रे भी चेंज करा पड़े तो इट्स बेटर जो आम नुआ क्रिएट कर तो आम सब बेले फ्यूचर को लेकिन भाविया पड़ो कि मत फ्यूचर रे जमी किसी चेंज करने को न पड़े तो से आम जाना दरकार जे आम केते कौ डेटा टाइप यूज कर तो ये रेंज स्पेशली रेंज थ्रो रेंज रे ही तुम जापर कि तुमको कौ डेटा टाइप यूज करार अच्छे फ्लोट यूज करार अच्छे डबल यूज करार अच्छे इंट केते यूज करार अच्छे लॉन्ग केते यूज करार होपफुली तुम बुझीपार कि केते आम यूज करवा जो छोट नंबर अच्छी से इंट यूज करा जो आम जानी ना केते बड़ हो नंबर जमीक कि बैंक अकाउंट नंबर आधार नंबर, राइट? ये सब बड़ बड़ नंबर आम जानी ना फ्यूचर केते बड़ हो पारे 12 डिजिट अच्छी मे बी 14 डिजिट हो पारे मे बी 16 डिजिट हो पारे, राइट? वी डोंट नो तो सही जगह हम लॉन्ग यूज कर पारे फ्लोट सेमिति जदि अकाउंट बैलेंस बैंक अकाउंट बैलेंस जदि आम भाव सो से जगह सब बेले आम डबल यूज करवा बट राइट डबल यूज करा बिकॉज आम जानी ना केते बिग नंबर हो पारे केते
बिग नंबर ऑफ माने से अकाउंट रे बैलेंस हे पारे हम इमेजिन भी कर परबानी जण जण से इनकम करंती जेमति कि अंबानी अडानी राइट. So in that case we should definitely we can go for double because float रो range होची कम as compared to double. तो सही जगह हम डबल यूज करा. आ जेतबे तुम जानि छ कि गोटे प्रोडक्ट रो प्राइस हे पारे से 10,000 20,000 लक्षे राइट अप टू से पर्यंत जदि पारे देन यू कैन गो फॉर फ्लॉट नो इश्यू. बट जिते अधिक तुम जान केते पर्यंत जीव केते बड़ नंबर हो पार इन दैट केस डेफिनेटली सेफली यू कैन गो फॉर डबल. कैरेक्टर डिफॉल्ट वैल्यू कौन U0000 राइट /U0000 डिफॉल्ट वैल्यू वेरी वेरी इंपोर्टेंट राइट. तुम MCQ क्वेश्चन रे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रे आसे कि डिफ माने कैरेक्टर डिफॉल्ट वैल्यू कौन से 3-4टा ऑप्शन दे थाए से भीतर दिस इज द करेक्ट आंसर राइट. तुम मन रखा पड़ो डिफॉल्ट वैल्यू कौन जो तुम वेरिएबल क्रिएट कर कार CH राइट किसी डेटा जब असाइन करन देन जो प्रिंट कर डिफॉल्ट वैल्यू या रहा. आम जो प्रैक्टिकल करवा से सब जिन देखा कि कौ डेटा टाइप डिफॉल्ट वैल्यू कौन प्रिंट करुच्ची राइट. डेटा असाइन कले केमती कौन प्रिंट करुच्ची ना बुलियन डिफॉल्ट रोचे फॉल्स. आम जदि डेटा असाइन करवा जमती कि बुलियन B इक्वल टू फॉल्स जब लिखा फॉल्स रहा. जदि बुलियन खाली B लिखा बुलियन B जब लिखा देन डिफॉल्ट वैल्यू विल बी फॉल्स. तो आम डिफॉल्ट वैल्यू भी जानवा दरकार. जदि किसी डेटा नथिबो देन बाय डिफॉल्ट तार वैल्यू इज फॉल्स. होपफुली तुम बुझा पड़ो. फ्लॉट रोची 0.0F और डबल होची 0.0D राइट. लॉन्ग 0L int only 0 without L also you can add it no issue. ना तो माइंड रे क्वेश्चन ऐसे दरकार कि हम तो प्रिमिटिव डेटा टाइप अच्छी व्हाई डू वी नीड रेफरेंस डेटा टाइप राइट. तो इन दैट केस बिकॉज वी शुड नो द लिमिटेशन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप राइट. लिमिटेशन कौन जो हम वेरिएबल क्रिएट कर इंट एज इक्वल टू 10 लेट्स से मते एज 20-30 स्टोर कर कौन करा पड़ो एज 1 एज 2 एज 3 एमती मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट करा पड़ो. सो जोटा पॉसिबल तो राइट मत हंड्रेड्स ऑफ वेरिएबल क्रिएट करार अच्छे तो मैं कौन एज 100 अप टू एज 100 पर्यंत मुझे क्रिएट करी दैट इज नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल करेक्ट. तो दिस लिमिटेशन कौन सिंगल वैल्यू स्टोर कर आर किसी मेथड नहीं राइट. मेथड कौन आगे जानवा नो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वन कौन मल्टीपल डेटा टाइप मल्टीपल डेटा हम स्टोर करें. सो दैट इज वे रेफरेंस डेटा टाइप कम्स इन. कॉम्प्लेक्स डेटा स्टोर कर मेथड बिहेवियर राइट गोटे रेफरेंस डेटा टाइप रो मेथड मल्टीपल मेथड थाए. तो दैट इज आल्सो वन एडवांटेज. देन यूज फॉर रियल ऑब्जेक्ट रियल टाइम ऑब्जेक्ट जदि रिप्रेजेंट करार अच्छे देन वी विल गो फॉर रेफरेंस डेटा टाइप. तुम गोटे जिन नोटिस कर मुझे स्ट्रिंग मेंशन करनी कौन भी बट हम डेटा टाइप जो क्रिएट कर स्ट्रिंग नेम इक्वल टू नागेश मुझे लिखी बट स्ट्रिंग तो नहीं कहीं कौटी भी बाइट माने डेटा टाइप लिस्ट नहीं कि ऊपर भी कौटी भी नहीं कौटी मेंशन करने. स्ट्रिंग इज ए इनबिल्ट क्लास. स्ट्रिंग इज इनबिल्ट क्लास माने जो आम गोटे क्लास क्रिएट कर राइट. कौन क्लास क्रिएट कला स्टूडेंट डिटेल्स
राइट जोटा हम क्लास क्रिएट कले आपको कह जाए यूजर डिफाइंड क्लास आ जहाँ जाभा सहित आसे जो आम जाभा इंस्टॉल कर जाभा सहित जो आसे ताक कह जाए इनबिल्ट क्लास राइट विथ जाभा ताक कह जाए इनबिल्ट क्लास तो स्ट्रिंग होची गोटे क्लास टाइप तो रेफरेंस डेटा टाइप हम जो पढ़िले मु मेंशन करछि क्लास तो स्ट्रिंग होची क्लास टाइप डेटा टाइप सो दैट इज वेयर मु जोटा कि लेखिनी राइट से तुम बुझे पे आउ थे ये लिखा पड़ला तो जेहेतु क्लास टाइप डेटा टाइप मु रेफरेंस डेटा टाइप लिखनी देयर आर मल्टीपल क्लासेस राइट जोटा कि जाभा सहित आसे इनबिल्ट क्लास तो जहाँ जाभा सहित आसे कौन कह जाए इनबिल्ट क्लास आ जहाँ निजे क्रिएट कर कह जाए यूजर डिफाइंड क्लास जो भी टर्म यूज करे तो तुम माइंड रे चलिया दरकार मुझे जो इनबिल्ट क्लास कहबी तो माइंड रे फटके आसी जा दरकार कि हाँ जहाँ जाभा सहित आसছে जो मुझे इंस्टॉल कली लाइब्रेरी सहित आसছে यूजर डिफाइंड क्लास माने जहाँ यूजर क्रिएट करছে कह जाए यूजर डिफाइंड क्लास टर्म सब मन रहा यूजर डिफाइंड क्लास इनबिल्ट क्लास right so why do you use because there are some limitation with the primitive data type limitation कौन सिंगल वैल्यू स्टोर करबो मेथड्स नहीं कॉम्प्लेक्स डेटा हम स्टोर करि परिबानी दैट इज वेयर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वन कॉम्प्लेक्स डेटा हम स्टोर करि परिबानी दैट इज वेयर वी विल गो फॉर रेफरेंस डेटा टाइप राइट एग्जांपल जो देखिबा स्ट्रिंग नेम देखो एट एग्जांपल ने स्ट्रिंग नेम student details equal to new student this is object creation we'll understand later object creation right एमिति किछि रिप्रेजेंट करा जाए किबा वेरिएबल क्रिएट करा जाए रेफरेंस डेटा टाइप विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग आमे जेतल प्रैक्टिकल करे मु तुम बुझेबी डिफरेंस भी कौन एक्चुअली प्रिमिटिव डेटा टाइप और रेफरेंस डेटा टाइप डेटा वाइज केमती डिफरेंस एक्सेस करबा केमती डिफरेंस राइट एवरीथिंग विल अंडरस्टैंड तो एटी कौन स्ट्रिंग और स्टूडेंट डिटेल्स होची रेफरेंस डेटा टाइप आगो जति पढ़ले इंट बाइट चार राइट ऑल दीज आर प्रिमिटिव डेटा टाइप व्हाट इज दैट प्रिमिटिव डेटा टाइप तो हम कौन सब पढ़ले वी अंडरस्टूड कि डेटा टाइप कौन वेरिएबल कौन वेरिएबल रूल्स कौन राइट देयर आर 4 रूल्स आमे बुझिले देन आमे जानले कि कौन सब डेटा टाइप अच्छी तार साइज तार रेंज डिफॉल्ट वैल्यू कि एक्चुअल कौन दरकार अच्छे रेफरेंस डेटा टाइप राइट रेफरेंस डेटा टाइप रे भी आमर अच्छी 4 प्रकार करेक्ट क्लास आमे एबे देखिले क्लास रो एग्जांपल धीरे धीरे इंटरफेस भी जानिबा एनम्स जानिबा एरे भी जानिबा राइट जेतबेले आमे रेफरेंस डेटा टाइप कोन पे यूज करबा आ तो रिपीट करछि कोन पे करबा तो मल्टीपल डेटा हमको स्टोर करार अछि कॉम्प्लेक्स डेटा स्टोर करार अछि गोटे माने मल्टीपल डेटा को गोटे यूनिट अनुसार यूज करार अछि राइट देन वी कैन गो फॉर रेफरेंस डेटा टाइप केमती यूनिट कहले गोटे यूनिट जेतबेले तुम ऑब्जर्व करथिबो जेतबेले मो स्टूडेंट डिटेल क्लास क्रिएट करछि राइट दैट इज नथिंग बट यूजर डिफाइंड क्लास किंबा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट इज क्लास टाइप डेटा टाइप तुम सेठी जो देखिबो इंट एज स्ट्रिंग नेम राइट ऑल दिस आई हैव क्रिएटेड दैट इज नथिंग बट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किंबा कॉम्प्लेक्स डेटा स्टोर करछि राइट मल्टीपल डेटा स्टोर करछि दैट इज वेयर ताको जाচ্ছে रेफरेंस डेटा टाइप मल्टीपल डेटा जदि मते स्टोर करार अछि गोटे यूनिट कंबाइन करार अछि मल्टीपल डेटा को गोटे यूनिट रे देन आई कैन गो फॉर रेफरेंस डेटा टाइप होपफुली एबे बुझी पारलो प्रिमिटिव डेटा टाइप रेफरेंस डेटा टाइप क्लास टाइप डेटा टाइप we will understand interface we will understand enums we will understand array but not in this video because बहुत complex है जो बुझिबा I hope तुम 100% क्लियर है गलो कि व्हाट इज डेटा टाइप व्हाट इज वेरिएबल केते प्रकार डेटा टाइप्स अछि जदि तुम बुझिलो देन यू आर ahead of 80% स्टूडेंट जो ने डेटा टाइप्स पढुछन कि जावा पढुछन तो कांग्रेचुलेट्स टू एवरीवन
नेक्स्ट वीडियो आम पढ़ा प्रैक्टिकली केमती डेटा टाइप वेरिएबल क्रिएट करा जाए कौन सब रूल्स रही सब जिन शिखा नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर देखा नेक्स्ट वीडियो।